Assalamu alaikum, my dear student of class 6. Welcome to your Friday lecture. I am your teacher, Mariam Hassan. Yes, students, today we are going to continue the exercise of your lesson number 5, Scarface, from your Understand and Communicate book. Yes, students, today we are going to do its second exercise, and this exercise is going to be done on your books only. Okay, students, remember that do the work on your book, and you can do the work with the pencil or with pen, it's up to you, but do it very neatly. Look at the second एक्सरसाइज गिव अस सिनोनिम फॉर ईच वर्ड, यानी आपने ये जो वर्ड्स हैं इनके लाइक मीनिंग्स हमने लिखने हैं, यानी ऐसे वर्ड जिनके सेम मतलब हों. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. ट्राइड, स्ट्रगल्ड, कोशिश करना. ठीक है. एनिमीज, फोज, दुश्मन. फेंटली, वीकली, कमज़ोरी से. लिटिल, स्मॉल, छोटा या थोड़ा. पुट, रखना. कीप. कॉट, सीज्ड. कॉट का मतलब होता है पकड़ना. सीज्ड भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रैब्ड वर्ड को भी आप लिख सकते हैं, GRABBED. और सीज्ड की स्पेलिंग है SEIZED. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज किल्ड, मर्डर्ड, MURDERED, मर्डर्ड. फिनिश्ड, ख़त्म करना. एंडेड. ठीक है. अलाउड, इजाज़त देना. परमिटेड, PERMITTED, permitted. Closer, nearer, यानी करीब तर. NEARER. Okay, so these are the synonyms, and you are going to write down on your books only, and no need to submit these books. You can just write it down, and when we have going to open schools, then you can let the work checked. Okay, so no need to submit your books. Yes, now the part B. Choose the best answer. They have given you a statement in which you have to given a correct answer. You can circle it, you can underline it, or you can tick the answer. Look at your first statement. Why was Scarface disliked by his tribe? कि Scarface को उसके कबीले वाले क्यों नापसंद करते थे? The first option is they envied him because of his nickname. They thought his nickname matched his face. They were offended by the ugly scar on his face, or they knew he had obtained the scar from a fight. Obviously, they were offended by the ugly scar. So C answer is correct. Next देखें, why did Scarface decided to look for the chief's son? कि Scarface ने क्यों फैसला किया था कभी सरदार के बेटे को देखने के लिए? A, he liked the boy. The chief had offered his daughter's hand in marriage to the finder. He wanted to win the respect of his tribe, or he knew where the boy was. So B answer is correct, because he wanted the daughter's hand in marriage to the finder. ठीक है, क्योंकि चीफ ने ऐलान किया था कि जो भी उसके बेटे को ढूंढ के लाएगा वो उसकी बेटी की शादी उससे कर देगा. सो बी आंसर. नेक्स्ट स्टेटमेंट. व्हेन डिड स्कारफेस एंटर द एनिमीज़ विलेज? के स्कारफेस दुश्मन के गांव में कब दाखिल हुआ? ही एंटर्ड इन द इवनिंग. He entered while the villagers were dancing. He entered immediately after the villagers had stopped dancing, or he entered when the villagers had all gone to bed. If you have remember the story, Scarface entered in the village when they all were gone to bed. जबकि वो सब जो थे सोने को जा चुके थे, तो then he entered in the village. So your D answer is correct answer. लास्ट स्टेटमेंट है, व्हाट डिड स्कारफेस हैव टू डू इन ऑर्डर टू लीव द विलेज सेफली विद द बॉय? कि स्कारफेस को अपना गांव यानी दुश्मन का गांव बाहिफाजत छोड़ने के लिए उसने क्या करना पड़ा था? ही हैड टू फाइट विद द मैन हु चेस्ड आफ्टर हिम. ही हैड टू परसुएड द चीफ टू लेट हिम गो. He had to leap over 7 skulls spaced out on the ground, or he had to jump from one to the other of 7 skulls with the boy on his back. If you have remember the story, उसको गाँव छोड़ने की तब इजाज़त मिली जब वो 7 खोपड़ियों पर से छलांग लगा सका लड़के के साथ अपनी कमर पे लिए बगैर फिसले. सो
what is your answer is D answer. So here is your exercise. What you have to do is you're going to do this exercise on book. Okay students, जी दिस इज़ योर होमवर्क टू एक्सरसाइज नंबर 2 ऑन बुक. जो हमने रिमेंबर जो भी हमने स्टानिम्स किए हैं वो आप बुक पे करेंगे. और इसी तरह जो अभी आपने डू पार्ट बी जो अभी मैंने आपको करवाया है पार्ट बी, जिसमें हमने स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को टिक या सर्कल या अंडरलाइन किया है, आपने वो बुक पर ही करना है. एंड प्लीज़ मेंशन द डेट एंड डे टू. ओके, and this work is going to be done on books and no need to submit these books in school. ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि आपको ये बुक सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, थैंक यू. ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.